Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living of conjoint communicated experience. Ladies and gentlemen, esteemed faculty and dear students, a warm welcome to our Republic Day celebration. As we gather here to commemorate the spirit of our nation, let us remind ourselves of the values that make our country great. Let us immerse ourselves in the soul-stirring melodies that echo the essence of nation. Let's call upon Spandita, Suchi, and Dipti and let the music bind us together. Today, we celebrate the 75th Republic Day of our beloved country, India. This day marks the beginning of our constitution and beginning of democratic rule. Today, we must remember our country stands for values such as justice, liberty, equality, and fraternity. This value, among many others, were integrated into a constitution by our constitution makers who worked tirelessly to draft a constitution which reflected our unique circumstances. कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले बुरे हों। एक बुरा संविधान अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अति सम्मानीय मंच एवं उपस्थित सदन, सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि पूर्व विदित है, हम सभी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर एक भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के पास कोई अपना संविधान नहीं था, लेकिन बाद में कई विचार विमर्श के बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया। Republic Day, it signifies the realization of a dream for our freedom, equality, and justice for all. Emotion run high as we reflect into our nation's journey, a journey marked by struggles, triumphs, and unwavering determination.
Republic Day is not just a day to unfold a tricolor flag, it's a day to unfold our heart with pride, gratitude, and a sense of responsibility to our motherland. The tricolor, with its saffron, white, and green hues, signifies the richness of a diverse culture, purity of our intentions, and the evergreen vision towards a better tomorrow. इस 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मुझे आप सभी को संबोधित करने का गौरव है। यह दिन हमारे संविधान के प्रभावी होने की सालगिरह के चिन्हन करता है, जिसने एक स्वतंत्र, समाजवादी, धार्मिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव रखी। हम यहाँ महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस संविधान में के निर्माताओं द्वारा किए गए यात्रा पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी जैसे दृष्टांती सुपुत्रों द्वारा नेतृत्व किए गए स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारे संविधान के रचनाकारों द्वारा की गई कठिन प्रयासों तक हमारे इतिहास के प्रत्येक अध्याय ने हमारे राष्ट्र की जीवंत चित्रपटी को रचा है। हमारा संविधान अक्सर लोकतंत्र के प्रतीक माना जाता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बराबरी के सिद्धांतों को सम्मानित करता है। यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के परीक्षण का सामना करने के साथ साथ हमारे समृद्ध और गतिशील समाज की बदलती आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए बनाया गया है। Without further ado, I request the beacon of wisdom, our esteemed principal sir, to grace this gathering with his words of inspiration and insight. We being as an Indian, we have to do our own work. We should not ask the questions that what my country has given me. Rather ask yourself that what I can give to my country. If you will give your country will prosper. And if the country prosper, the value will be, and this level of you will also be increased. Today, after a long time, I'm not giving any political issues, but after a long time, people are recognizing India because we all are united together. People were telling that the population is the worst situation for the country. But because of this population, because of our diverse culture but united together, we are being now recognizing in the world. People are now feeling and been taking that India is leading on this, some of the aspects and some of these events. And that is because of our unitedness. Thank you to all of you, my dear SAIoneers, because you have done your good job. I am not expecting that you should also hold the gun and will be go to and protect. Yes, at your age, at your work is that you being as a student, you have to do your work. We being as a teacher, we have to do our work. And our parents, those who are there, they have also done their work. So thank you to our parents also, those who have been come in the morning and witness this program. And thank you to all of you again. Happy Republic Day to all of you, and celebrate that one, observe that one, remind and recall that one. Thank you to all of you.